then we will do some question किछि अछि ଟିକେ फास्ट करबा जस्ट कंसंट्रेट करो हला कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम तुम जानि छ दी टाइप रो गवर्नमेंट अछि गोटे होछि यूनिटरी आ गोटे को हम कहउछन फेडरल ओके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट या पूर्व चैप्टर हम कोन पढ़ले देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वन इज पार्लियामेंट्री वन इज प्रेसिडेंशियल को बेसिस रे डिफरेंशिएट हिची द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ओके से बेसिस रे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को दी भाग विभक्त करछन गोटे होची लेज पार्लियामेंट्री गोटे होची प्रेसिडेंशियल एक्जेक्टली सेम दिया हियर आल्सो द गवर्नमेंट्स आर classified into two types one is unitary and other is federal this is another type of types of classifying the governments okay this is another classification गोटा को हम कह परिबा यूनिटरी गोटा को हम कह परिबा फेडरल बेस्ड ऑन व्हाट इज द बेसिस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स को टाइप रो रिलेशनशिप अछि नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट मानक भितर से बेसिस रे हम जण को कहउछन यूनिटरी और जण को कहउछन फेडरल ओके यूनिटरी माने सिंपली गोटे लाइन रे बुझो यूनिटरी माने जदी सब किछि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाइछि नेशनल गवर्नमेंट पाखरे कॉन्सेंट्रेट हेछि ताको हम कहबा यूनिटरी जदी प्रॉपर पावर डिवीजन हेछि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भितर ताको हम कहबा फेडरल ओके सिंपल एति कि होछि तार डिफरेंशिएशन ओके by definition unitary government is one in which all the powers are vested in the national government and the regional governments okay if tabre I would consider in federal system kona a federal government is what on the other hand is in one in which powers are divided between national government and regional governments okay by the constitution itself and both operate in their respective jurisdiction independently यूनिटरी माने कौन पूरा स्ट्रिक्टली ए पावर होची सेंटर रो आउ ए किछि कम पावर दिया थी रीजनल गवर्नमेंट को बट मोस्ट ऑफ द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नेशनल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट माने कौन जोडे की कंप्लीट पावर को डिवाइड कराई छी ओके बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवाइड कर दी छी जे इतके पावर तुम पाखर रहबो इतके पावर स्टेट पाखर रहबो ओके and nobody will encroach the others area okay they will operate in their respective jurisdiction without encroaching the power of others okay like center के पहले encroach करिवनी state रो power रे state के पहले encroach करिवनी center रो power okay this is federal system unitary system रे कोन हो center जाय कि state रो power भीतर की पसिकी ता power नै जीवो बेले बेले okay तार power जगह निर्धारित नै आसीओ okay for example हमर जो अछि emergency provisions okay तो जानी इमरजेंसी प्रोविजन रे कोन हुए धर प्रेसिडेंट रूल लागिला को स्टेट रे सेंटर कोन करे सब जगह पावर ताटू नै जाय ओके सो दैट इज वन फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके तो फेडरल गवर्नमेंट हमर कोड अछि ओके ब्रिटेन फ्रांस जापान चाइना ओके स्विट्जरलैंड सॉरी स्पेन ए सब रे अछि हमर दे हैव यूनिटरी मॉडल गवर्नमेंट while US Switzerland Australia Canada okay emanଙ୍କର कोन अछि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट okay in federal model national government is known as federal government and the central government or union government regional governments are known as state governments or provincial government कोड को ना दिया अछि okay जेमति कि provincial government canada रे तुम कहबो province कहउचंदी इंडिया रे हम को state कहउचंदी okay कोड को ना दिया अछि दैट्स इट फेडरेशन टर्म कोड वासी द टर्म फेडरेशन इज ए लैटिन वर्ड ओके इट इज नथिंग बट ए ट्रीटी और एन एग्रीमेंट ओके जोटी सेंट्रल और स्टेट भितर कि छोटी ट्रीटी या तो किछोटी एग्रीमेंट है कि गवर्नमेंट हेची ताको हम कहउचंदी फेडरल गवर्नमेंट ओके देयर विल बी ए ट्रीटी और देयर विल बी एन एग्रीमेंट लाइक फॉर एग्जांपल इन यूएसए जेतला यूएसए बनला देयर आर 13 स्टेट्स ओके दे कम विथ ईच अदर विथ एन एग्रीमेंट okay that's why they are called as a federal government okay the units of federations are known as various names okay जेमति कि स्टेट को होची यूएस रे कैंटन को होची स्विट्जरलैंड रे प्रोविंसेस को होची कनाडा रे एंड रिपब्लिक्स को होची रशिया रे ओके से माने कोन करंदी गोटे एग्रीमेंट या तो गोटे ट्रीटी द्वारा माने एकाठी होंती आसी ओके तार फीचर देजी देखो एवडा में एवडा मन रखियो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट व्हाट आर द फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट
Just remember this table in this chapter. A chapter actually table ना ही important है फीचर एटा बहुत कन्फ्यूजिंग फास्ट ऑफ ऑल फेडरल गवर्नमेंट रे कौन रहिबो डुअल गवर्नमेंट गोटे हूँ नेशनल गवर्नमेंट आ गोटे हूँ स्टेट गवर्नमेंट ओके और रीजनल गवर्नमेंट बट यूनिट रे कौन रहिबो सिंगल गवर्नमेंट गोटे ही रहिबो सेंट्रल गवर्नमेंट ओके और नेशनल गवर्नमेंट सेकेंड कौन फेडरल गवर्नमेंट रे रहिबो सब बेले रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट रे रिटर्न भी हेई पारे अनरिटर्न भी हेई पारे ओके फेडरल रे रिटर्न हाँ बाध्य कौन पे कि द पावर्स which are completely separated between state and center will be written in that constitution जदि constitution रे लिखा ही नहीं ओके सेपरेशन ऑफ पावर या तो पावर डिवाइड करा ही नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट केबे भी एनक्रोच करि परिबो स्टेट गवर्नमेंट को हला तो माने फेडरल केमती हो सेटा धीरे धीरे यूनिट रे हिजो सेति में फेडरल गवर्नमेंट रे ऑलवेज देयर विल बी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बट यूनिटर रे कोन कि अनरिटर्न तो रहले तो यूनिट रे होबार चांस अधिक ही माने जदि लिखा ही नहीं माने सेंट्रल गवर्नमेंट तो किछि भी कर परिबो जदि लिखा भी हेची इफ द प्रोविजन्स आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ओके इफ द प्रोविजन्स आर इनफ्लेक्सिबल इन नेचर माने गवर्नमेंट ताको इजीली चेंज कर दे पारथुबो देन से केस रे भी यूनिट रे होबार चांस अछि जोडा कि फ्रांस रे ओके थर्ड कोन डिवीजन ऑफ पावर ओके बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट देयर विल बी ए स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन national and regional governments in what federal government but in unitary government there is no division of power all the powers are vested in national government okay see the meaning is self explanatory माने unitary माने गोटे पर्टिकुलर यूनिट पाखरे सबुतक पावर रह जाइछि ओके तो तार सब प्रोविजन देखो टिल्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ओके माने कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न अनरिटर्न हे पारे एटा छाडो एटा तो गोटे कॉमन ये फास्ट देखो सिंगल गवर्नमेंट ओके सबुतक पावर गोटे पाखे रहिबो थर्ड देखो किछि डिवीजन ऑफ पावर रहिलानी ओके सब जगह पावर रहिला से सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रे सेमतिया फोर्थ देखो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडी कोन रहबो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रे कंप्लीटली सेपरेशन कराई छि पावर कार कोन ताकू तुम वायलेट करि परिबोनी एंड इट्स रिटन आल्सो बट हियर कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी सुप्रीम ओके कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हे भी पारे जोड़ी कि तुम स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि चेंज चेंज करके तुम हाथ को पावर नहीं आस आ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ही नहीं जोड़ी कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटेन तो से माने किछि भी करि पारिबे ओके देन एडी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एडी कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिजिड ओके रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कोन पे बिकॉज एवरीथिंग इज स्ट्रिक्टली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ओके देयर इज ए वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट्स व्हाई इट इज रिजिड जदि फ्लेक्सिबिलिटी रहबो देन यूनिटरी हमारा चांसेस बहुत इजी ओके सो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो पारे फ्लेक्सिबल भी हो पारे देन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डेफिनेटली इफ देर इज नो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी then if let's say center is violating certain laws of states or center is encroaching upon the powers of the state where you will go okay and if the judiciary is not independent then how you will expect that judiciary will properly give the judgment okay so it judiciary independent haba bahut zaruri it judiciary independent he pare no he pare bicameral legislature okay माने हमर जो रहउछ लोअर हाउस अपर हाउस दुटा हाउस ताक कहउछन बाइकैमरल लेजिस्लेचर एटा सब फेडरल गवर्नमेंट रे मस्ट यूनिटरी गवर्नमेंट रे बाइकैमरल हे भी पारे बाइकैमरल न हे भी पारे ओके सो दिस आर द फीचर्स सातटा फीचर अछि याकू यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट ओके दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रीलिम्स रे भी आसियार बहुत चांस अछि आ तो मेंस रे भी लिखि परिबो कोडी कोडी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसे एवळा ओके फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट भीतर डिफरेंशिएशन जाना कारण एबेरो जो पैटर्न अछि धर 10 मार्क रे या 8 मार्क रे पड़छि देन यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स क्लियरली एंड तुमको बहुत भल मार्क मिलिबो ओके तो कौन कौन थिला फीचर विल जस्ट रिवाइज फेडरल गवर्नमेंट रो कौन थिला डुअल गवर्नमेंट ओके यूनिटर होची सिंगल गवर्नमेंट यार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यार नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन ओके यार डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर यार डिवीजन ऑफ पावर नहीं फेडरल गवर्नमेंट रो सुप्रीमेसी ऑफ द constitution will be supreme here may or may not be supreme here constitution will be rigid here the constitution may or may not be rigid here the judiciary is independent here the judiciary may or may not be independent okay in federal government we will have a bicameral legislature okay but in unitary government either we may or may not have a bicameral legislature okay then kemiti federation hochi these are not very important just टिके आमे ब्रीफ कर देबा ओके या ऊपर प्रीलिम्स क्वेश्चन किछि बनेनी फेडरेशन कैन बी फॉर्मड इन टू वेज ओके वन इज बाय इंटीग्रेशन और
second is by disintegration. Okay, that example देची कि in the first case a number of military weak or economically backward state will come together to form a big or strong union. Okay, for example in US ମୁଁ କହିଲି तुमको example देली first ଯେତେବେଳେ ବନିଥିଲା 13ଟା state ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର. Okay, they integrated with each other and formed the United States. Okay, ତାପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଜି 50ଟା state ହେଇଛି. Second case ରେ କ'ଣ, a big unitary state is converted into a federation by granting autonomy to the provinces to promote regional interest. Okay, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନଟା ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ରନ୍ ଇଟ୍, ସୋ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କି ତାକୁ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବନେଇଲେ. ଓକେ, ଆଣ୍ଡ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଟୋନୋମି ଦେଲେ. ଓକେ, ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ରିଜନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ Canada. Okay, so our federation, Indian federation, is somewhat similar to this Canadian federation, somewhat similar, not to the US federation. Okay, so the US is first and the oldest federation in the world. Okay, this statement also you remember, it was formed in वगैरह वगैरह एटा दरकार नहीं, world history तुम पढ़िबो 1787 that American war of independence ହେଇଥିଲା. Okay, American revolution तापर ये बनिଛି. Then Constitution of India provides for a federal system of government in the country. Okay, we are not purely unitary, we are not purely federal also, but it provides a federal system. Okay, the framers adopted the federal system due to two main reasons. I mean, कौन में federal system को adopt कर ले instead of unitary system. One is the large size of the country. Okay, तो जदि तमें unitary system को adopt आम करिथांते, then it was very difficult to promote the regional interest. Okay, we have different regions, I mean what languages, so many religions. Okay, so many different sects. Okay, so very diverse country. Okay, and it's very large, so to promote the regional interest, to promote different sections of the society who are, I mean those are backward and all, we wanted a federation kind of system. Okay, not a unitary system, because आम यूनिटरी लॉ बन कि सब रिलीजन सब लोक इम्पोज कर पारानी. ओके, से गोटे रीजन. सेकेंड इज सोशियो इकोनॉमिक, आई मीन सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, जोटा कि कहली लैंग्वेज वगैरह वगैरह. ओके, फर्स्ट इज साइज ऑफ द कंट्री, सेकेंड इज सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, लैंग्वेज, रिलीजन, ऑल दिस थिंग्स, सेक्ट वगैरह, एथनिसिटी. Okay, so these are the two reasons why we have adopted the federal kind of system in our country. एटा मन रखो, however the term federation has nowhere been used in the constitution. We are a federal country, but this federation word कोठी भी हमर original constitution रे लिखा है नहीं. This is very very important. Okay, a statement exam रे आसे, so you remember this federation word is nowhere used in our constitution. कौन आम constitution लिखा है? Article 1 आमर कौन कहूँ? The constitution describes India as a union of states, not a federation of states. Okay, because our states are not came together with some agreement or with some treaty. जेहेतु आम आसी ना आम फेडरेशन बोली वर्ड यूज करना, आम कौन वर्ड यूज कर यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके, तो तापे आंबेडकर कौन कहते? द फ्रेजेस यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट to indicate two things. One is Indian federation is not a result of any agreement, okay, like American federation, and the second thing is the states have no right to cede from the federation. जदि तुम एग्रीमेंट रे आस्थिबो, धर इंडिया रो 30टा स्टेट जदि गोटे एग्रीमेंट रे आस्थान्ते मिसिकी, ताहले कोन सेठी ए भी प्रोविजन थांता जतिला मु चाहिबिनी मु एडू यूनियन रो पळेबी, जोडा कि अमेरिका रे अछि. इफ ए स्टेट डू नॉट एग्री, ही कैन सीड फ्रॉम द अमेरिकन फेडरेशन, बट इंडिया से प्रोविजन ना. कौन स्टेट निज इच्छा इंडियन फेडरेशन को छाड़ी जापर ना. ओके, बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन वी हैव नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन एटा आम देखिले इंडियन फेडरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल. ओके, नॉट यूएस मॉडल है. इंडियन फेडरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल. आमर किसी एग्रीमेंट है नहीं, सो वी आर नॉट फॉलोइंग दैट अमेरिकन मॉडल. ओके, कौन डिफरेंस भी हमें देखिले इंडियन और सॉरी कैनेडियन और अमेरिकन मॉडल के कौन डिफरेंस इन द फॉर्मेशन. ओके, गोटे हूँ कैनेडियन बॉडी बनी विथ डिसइंटीग्रेशन एंड अमेरिकन बॉडी बनी विथ इंटीग्रेशन. एंड आउ गोटे कौन हूँ
in its preference to the term union. Okay, ये जो term union एटा कनाडा यूज होइछि हम यूज करछंती बट अमेरिकन वाला यूज करछंती फेडरेशन. ओके, आ गुड होछि हमर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. ओके, जोड़ा कि अमेरिकन फेडरेशन रे कोन बहुत सारा पावर स्टेट को दिया है जोड़ा कि कनाडा और इंडिया रे दिया है. कनाडा और इंडिया रे बहुत सारा इंपोर्टेंट पावर सब सेंटर को दिया है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस. देन फेडरल फीचर कौन. ओके, आम कन्स्टिट्यूशन आम तो कहले आम देश को आम फेडरेशन कहीकि वी हैव कंसिडर्ड इंडिया एज ए फेडरेशन. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आवर फेडरेशन. ओके, यूनिटी आम नाई बोली आम कहउछंदी. ओके, तो फेडरल फीचर आम बाहर कौन कौन अच्छी. वी आर नॉट प्योरली फेडरेशन ऑल्सो. ओके, सो देयर मस्ट बी सम यूनिटरी फीचर ऑल्सो. सो विल सी फर्स्ट व्हाट आर द फेडरल फीचर्स. कौन कौन फेडरल फीचर अच्छी. फास्ट होची डुअल पॉलिटी. ओके, डुअल पॉलिटी माने कौन. द पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन ओके एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी. माने हमर देखो सिंपल एग्जांपल देखो गोटे गवर्नमेंट गोटे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पार्टी सरकार अच्छी सेंटर रे आ गोटे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पार्टी अच्छी स्टेट रे. ओके, सो दिस इज डुअल पॉलिटी. ओके, एंड ईच the union government deals with the matters of national importance like defense, foreign affairs, currency वगैरह वगैरह. The state government also on the other hand look after the matters okay like public order, agriculture, health, local government etc. Okay, so this is dual polity. सेकेंड कौन रिटर्न कन्स्टिट्यूशन आपको किसी एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं. इंडिया रो कन्स्टिट्यूशन होछु वर्ल्ड रो सब लेंथीएस्ट कन्स्टिट्यूशन. ओके, एडा हम पढ़ी भी आसिले फेडरल फीचर रे रहिया दरकार कंपलसरी रिटर्न कन्स्टिट्यूशन. थर्ड कौन डिवीजन ऑफ पावर. ओके, डिवीजन ऑफ पावर कौन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. ओके, तुम जानिछो 7th शेड्यूल जो हमर अछि. ओके, 7th शेड्यूल रे कौन अछि यूनियन लिस्ट अछि, स्टेट लिस्ट अछि और कॉन्करेंट लिस्ट अछि. यूनियन लिस्टटा होछि सेंटर पई, स्टेट लिस्ट होछि स्टेट पई. कॉन्करेंट लिस्ट रे both can take the decisions but the final upper hand will be with the center. Okay, so पावर को हम डिवाइड कर दिछन का पाखरे कोन रहबो. ओके, फोर्थ कौन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डेफिनेटली आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट एंड नॉट द जुडिशियरी. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ लिखाई छी सेटा होची सुप्रीम. इफ यू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन then the supreme court will come and will change the decision. Okay, will declare that particular thing as unconstitutional. So our constitution is supreme. Then rigid constitution, definitely there are certain provisions in the constitution kali bhi hum padhile amendment re ki where we need a special majority of the parliament and consent of half of the states. Okay, the federal features cannot be changed without the consent of the half of the state. So that in that sense our constitution is rigid. Okay, sixth कौन independent judiciary. Okay, our judiciary is independent definitely in terms of I mean केमिति हम ताको independent करिसंदी by giving them the these various measures like security of tenure to judges, fixed service conditions. Okay, and all these things judiciary decides for itself. Okay, even you see in the appointment of judges also government doesn't have very I mean powerful role in the appointment of judges. Okay, so our judiciary is independent. Then bicameralism पढ़िले हमें राज्यसभा और लोकसभा. Okay, these are the feature of our federation. Okay, what again we'll see dual polity, written constitution, division of power, supremacy of the constitution, rigid constitution and independent judiciary and bicameralism. These are the features of federal features of our constitution. But since we are not a pure federation like American federation, there are certain unitary features also. What are those unitary features? Strong center. देखो they are all self-explanatory words. Strong center माने कौन जितने जितने important provision अच्छी सब हमें center को दे दीचन. For example, external affairs, defense, communication. Okay, all these important things are with in the union list. Union list रे हमारा पाखापाखी 97 or some item अच्छी. Okay, they are purely in the jurisdiction of union. Okay, सेठी state रा कौन सी role नहीं. That's why I am बनई strong center. Our center is very strong because we have given the most important powers to the center. Okay, I would कौन residual power माने जो जिनस residual power माने कौन जोटा यूनियन लिस्ट रे भी नहीं, स्टेट लिस्ट रे भी नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट रे भी नहीं. सेउडा हमें कौन लिखिसंदी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कि दैट ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर. बट यूएस रे कौन जो जिनस कोठी भी लिखा हैनी फॉर एग्जांपल रही जाईछि सेडा से माने स्टेट को देइछंदी, स्टेट विल डिसाइड.
बट इंडिया रे कौन से पावरटा दिखाई सेंटर ओके रेसिडुअल पावर जोटा कहते हैं सेकेंड फीचर कौन यूनिटरी फीचर स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल माने स्टेट को तुम केत भी डिस्ट्रक्ट कर फॉर एग्जांपल आम पढ़ी आमेंडमेंट रे कि तुम स्टेट रो बाउंड्री है ओके कि तार ना है किसी भी सेंटर चेंज कर विथ सिंपल मेजोरिटी विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट ओके सो स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल दे आर डिस्ट्रक्टेबल तुम भांगी पार फॉर एग्जांपल ए देख सेंटर भांगीदेला आंध्र प्रदेश आउ तेलंगाना को भांगिक दुईटा स्टेट करदेला यूपी को भांगिक यूपी आ उत्तराखंड करदेला 2000 मसीह ओके छत्तीसगढ़ आउ अलग हो गले एमपी ओके सो स्टेट्स आर नॉट इंडस्ट्रिएबल माने तांको तमे केतला भी सिंपल मेजोरिटी रे तांकर ना चेंज करि परिबो बाउंड्री चेंज करि परिबो ओके दु तीनटा स्टेट बनै परिबो ओके सो जेहेतु सेंटर ताको सिंपल मेजोरिटी रे करि परिबो सो इट इज ए यूनिटरी फीचर देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका रे कोन सेंट्रल पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अछि स्टेट्स मानकर निजर कॉन्स्टिट्यूशन अछि अमेरिका यूएस रे हैला हमर कोन गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर भी ताको फॉलो करिवो स्टेट भी ताको फॉलो करिवो ओके जदि आम प्योर फेडरल सिस्टम होता आमर भी दुईटा कन्स्टिट्यूशन था ओके देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कन्स्टिट्यूशन जोड़ा कि एबे पढ़ले सेंटर ता मन इच्छा स्टेट मान को भांगी पार ओके ना चेंज कर पार एमती बहुत सारा जिनस अच्छी जोड़ा कि जस्ट सिंपल मेजोरिटी सेंटर डिसीजन नहीं पार ओके स्टेट रो भी बहुत सारा प्रोविजन रे स्टेट को बिना कंसल्ट करिकी ओके ये जिनसटा फेडरेशन रे रुहेनी अमेरिकन फेडरेशन रे जिनसटा नहीं okay American central government cannot take unilateral decision and encroach the power of the states okay जोटा कि गोटे यूनिटरी फीचर गोटे यूनिटरी गवर्नमेंट ही जब माने किसी ना किसी चेंज चेंज कर दे पारिबो बहुत इजीली देन नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन ओके जदि आमे प्योर फेडरेशन हेइथांते हमर जेतिकिटा स्टेट अछि तांकर रिप्रेजेंटेशन समस्तଙ୍କର समान हेइथांता राज्यसभा रे माने धर जदि ओडिसा रा 5टा मेंबर अछंती राज्यसभा रे तो यूपी रो भी 5टा रहा कथा अरुणाचल प्रदेश भी 5टा रहा कथा ओके जिते बड़ भी हो कि मीडियम भी हो कि छोट हो समस्त इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा कथा पार्लियामेंट माने राज्यसभा रे ओके जोड़ा कि इंडिया रे नाही यूपी रो सबुठ अधिका मेंबर अछंती अरुणाचल प्रदेश हे गला मिजोरम हे गला एमानकर ऑलमोस्ट एक या तो शून्य एमटी रिप्रेजेंटेशन अछंती बट अमेरिका रे कोन सबु स्टेट रो दुईटा मेंबर अछंती अपर हाउस रे तांकर ओके से स्टेट जिते बड़ हो कि छोट हो एवरी स्टेट हैज 2 मेंबर्स इन द अपर हाउस से अमेरिकन सीनेट रे अमेरिकार अपर हाउस को कहते सीनेट अमेरिकन सीनेट रे टोटल 100टा मेंबर ओके बट इंडिया रे सेमतिया नुह ओके अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देन emergency provision you know during emergency all the powers are going to the center okay जोटी प्रेसिडेंशियल रूल लगिला या तो नेशनल इमरजेंसी लगिला से कौन होची स्टेट मिनिस्टर या तो स्टेट कैबिनेट रो पावर डिजॉल्व हो जाउची ओके सब पावर पड़ोची सेंटर पाखु सो से टाइम रे हम यूनिटरी हो जाउछंती ओके देन सिंगल सिटीजनशिप यूएस रे कौन यू विल हैव डुअल सिटीजनशिप फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए पर्सन फ्रॉम कैलिफोर्निया देन तुम्हारे कैलिफोर्निया रे गोटे रहबो मेंबरशिप आई मीन सिटीजनशिप देन यू विल हैव ए यूएस सिटीजनशिप ओके बट इंडिया रे कौन गोटे ही सिटीजनशिप सो इट इज ए यूनिटरी फीचर ओके इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ओके यूएस रे कौन द फेडरल लॉस विल बी चैलेंज्ड इन फेडरल कोर्ट ओके तांकर अछि फेडरल कोर्ट और स्टेट रो अछि स्टेट कोर्ट तांकर कौन फेडरल लॉ केवल फेडरल कोर्ट रे चैलेंज होबो स्टेट लॉ केवल स्टेट कोर्ट रे चैलेंज होबो हमर सेमति नै हमर सेंटर स्टेट भितर कॉन्फ्लिक्ट जदि अछि सी हूँ सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन रे हाई कोर्ट किसी करें स्टेट आउ सेंटर भितर कॉन्फ्लिक्ट अच्छी तो स्टेट रो मैटर हाई कोर्ट भी किसी कर कथा बट हाई कोर्ट रे हमर हाई कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन भितर नहीं सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके सो इट इज इंटीग्रेटेड दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जदि प्योरली इंडिपेंडेंट होता ताले स्टेट रे सेंटर रे डील होता जेहेतु आम प्योर इंडिपेंडेंट फेडरल नुह ओके समहाट यूनिटरी से कौन हो सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट गुड़ा या तो स्टेट रो कॉन्फ्लिक्ट गुड़ा सबू आम डील कर सुप्रीम कोर्ट रे ओके एंड आर जुडिशियरी सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट तातले हाई कोर्ट तातले लोअर कोर्ट तुम ये हारल ये हारल ये गल अमेरिका सेमती नुह तुम स्टेट रो जिनस केवल स्टेट रे लड़ो सेंट्रल रो जिनस केवल फेडरल कोर्ट रे लड़ो ओके
strict separation of powers ସେଠି ଅଛି. Then all India services. Okay, this is also one type of unitary feature. Center appoint କରୁଛି ଆମର जो IAS IPS IFS ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ appoint କିଏ କରୁଛି? Center କରୁଛି. Center will appoint and give training. Okay, then they will send it to the states. State ର କ'ଣ power? Transfer and posting. तो यूनिटरी है. जदि आमर प्योरली सेंट्रल सिविल सर्विस केवल सेंटर ही अपॉइंट करता ट्रांसफर करता सब करता स्टेट रे जहाँ अच्छी केवल स्टेट वाला ही करते ताहले प्योर फेडरेशन होता. बट आमर जेहेतु सेमती ना स्टेट सिविल सर्विसेज भी अच्छी सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी अच्छी ऑल इंडिया जोड़ा को कि सेंटर अपॉइंट करुच्ची आउ ट्रांसफर वगैरह स्टेट कर. ओके, स्टेट रो किसी पावर नहीं अपॉइंटमेंट करियारे या तो ट्रेनिंग दबारे. ओके, तो ये प्योरली सेंटर रो पावर होगा. तेणु दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी आमर जी सीएजी होचंदी तांको किए अपॉइंट करूची? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करूची. स्टेट गवर्नमेंट रो किसी पावर नहीं बट स्टेट गवर्नमेंट को आसिक भी से ऑडिट करूचंदी. स्टेट गवर्नमेंट रो फाइनेंशियल थिंग भी से ऑडिट करूचंदी. ओके, सो एटा कोन हला यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हला. देन कौन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट. ओके, स्टेट लिस्ट रो भी किसी भी जिनस जदि पार्लियामेंट रे ओके द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. ओके, जदि राज्यसभा रे मेजॉरिटी गोटे रिजोल्यूशन आसिला देन स्टेट कैन चेंज सर्टन थिंग्स इन द स्टेट लिस्ट आल्सो. ओके, जोटा कि एक्चुअली हवा कथा नुह इफ वी आर ए प्योरली फेडरल स्टेट. ओके, बट जेहेतु आम पाखे यूनिटरी फीचर भी किसी अच्छी आम कौन कर राज्यसभा किसी लोक मेजोरिटी किसी जिन गोटे पास करदे देन सेंटर विल बी एलिजिबल टू डू दोज थिंग्स इन द स्टेट लिस्ट. ओके, यूनिलेटरली. देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये स्टेट रो कौन कंसल्टेशन ना सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी चाहिए गवर्नर करके जो भी स्टेट अपॉइंट कला और निजर एजेंट भाया काम कराइला. ओके, सो दिस इज नॉट ए साइन ऑफ फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज यूनिटरी. देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी सेंट्रल इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंट करुच्ची? सेंटर अपॉइंट करुच्ची. बट स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन किए करूछंदी? से माने आसी करूछंदी. से स्टेट रो कौन सी पावर नहीं तांको अपॉइंट करियारे बट स्टेट रो इलेक्शन रे तांके आसी they will manage. Okay, but they are appointed by the center. So this is unitary. Then veto over state bills. Okay, there are certain bills, okay, they will be passed in the let's say in the Vidhan Sabha, but governor can what तांको रिजर्व रखी पारिबो, प्रेसिडेंट को पठेई पारिबो. प्रेसिडेंट जदि असेंट देले एग्री करले ताहले से बिल पास हबो नहले हबोनी. तो एटा कोन एटा गोटे यूनिटरी फीचर. स्टेट रो बिल स्टेट डिसाइड करिया कथा बट गवर्नर ताको रिजर्व रखुचंदी प्रेसिडेंट बाई. प्रेसिडेंट तापर डिसाइड करछन माने कोन सेंटर तापर डिसाइड करछ. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. सो देयर आर सो मेनी फीचर्स वी हैव स्टडीड in terms of federal features in unitary features. Okay, there are some critical evaluation माने कि किसी critical तक analyze करछन. This is actually not important, just a statement मन रखी था. ओके, कि एटा तमे मेंस रे लिखि पारियो केसी वे रे डिस्क्राइब करछन हमर कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल. ओके, नॉट प्योर फेडरल बट क्वाजी फेडरल. और दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट. ग्रानविल ऑस्टिन ही कॉल्ड इंडियन फेडरेशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड. गवर्नमेंट इज आल्सो आपको बहुत जगह यूज करूची. तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऊपर जब किसी भी क्वेश्चन आसला ना यू जस्ट राइट दिस इन योर इंट्रोडक्शन. ओके, दैट्स ऑल. आउ ऑलमोस्ट ये चैप्टर किसी ना है प्रीलिम्स रिलेटेड ऑलमोस्ट किसी ना. हाँ, बोम्बाई केस रे कौन है कि ये जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताको आमे इंक्लूड करिसंदी बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट रे. ओके, सो फेडरल कैरेक्टर ऑफ आवर गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, बेसिक फीचर ताको गवर्नमेंट चेंज कर परिबा नाही. तो माने आमे केबे भी गोटे यूनिटरी गवर्नमेंट हे परिबा नाही. ओके, बाकी एडा ते इंपोर्टेंट नाही. सो चैप्टर ओवर. नाउ विल गो टू क्वेश्चन आंसर. आज तो मैं बेसिक क्वेश्चन मैं बनईनी बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम. ओके, सो विल सी देखीदे तापर जदि कार किसी डाउट अच्छी यू कैन आस्क एंड विल एंड द सेशन. ओके,
First question, जो मैंने also attend the question. In the context of India, which of the following principles is are implied institutionally in the parliamentary government? Okay, these are all UPSC questions. भलार पढ़ो in the context of India, which of the following principles is are implied institutionally in the parliamentary government? Okay, members of the cabinet are members of the parliament. Answer type करो. Okay, ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. Cabinet is headed by the head of the state. समस्त आंसर जो मैंने भी करिछ. ओके, ऑलमोस्ट ए जणे करिछ डी. ओके, हाउ डी इज करेक्ट? कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट की कैबिनेट को हेड President. President is the head of the state and Prime Minister is the head of the government. गवर्नमेंट. कैबिनेट को किए करूछंदी हेड? प्राइम मिनिस्टर. Okay, not the head of the state. So D will be wrong. Okay, so D will be wrong means 3 जोट जोट अच्छी सी भूल. Okay, so answer will be 1 and 2 A. Right. Next, the Prime Minister of India at the time of his or her appointment need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become a member of one of the house within 6 months. Need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become member of the Lok Sabha within 6 months. Must be a member of one of the house of the parliament. Must be a member of the Lok Sabha. मैं तुमको ऑलरेडी एग्जांपल दे कि कही. ओके, एक क्वेश्चन भूल हवा कथा नुह. Everybody is answering A. Some people are answering C also. Okay. Okay, we'll see. First we'll see D. Must be a member of the Lok Sabha. Okay. मैं तुमको एबे कहली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज ए मेंबर ऑफ राज्य सभा. तो ये ऑप्शन है भूल. मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, तो एबे तुमको कहली कि आमर कौन एटा होची ब्रिटेन रो प्रोविजन एक्चुअली. ओके, इंडिया रे कौन तुम जदि भी नथिबो तुमको फास्ट रे तुम धर किसी मिनिस्टर ना माने मेंबर को भी हाउस रो ना तुम स्टिल यू कैन बी ए मिनिस्टर. तुमको 6 मास भितर इलेक्ट होके आसियार अच्छी. एग्जांपल इज आमर जे अछंती एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन ताका ना जयशंकर. Jayashankar. हाँ, जयशंकर. इन हिज फर्स्ट टर्म सी जो फर्स्ट रे हेले लास्ट ईयर आई मीन लास्ट गवर्नमेंट रे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सी को भी हाउस रो मेंबर नथिले. ओके, लेटर विदिन 6 months ही वाज इलेक्टेड टू राज्यसभा. ओके, आई थिंक फ्रॉम राजस्थान और गुजरात फ्रॉम एनी स्टेट एनी नो प्रॉब्लम. आमर तास तो किसी लेट नहीं. बट गुड एग्जांपल दे बुझुछि जे जयशंकर जो मिनिस्टर हेले सी को भी हाउस रो मेंबर नथिले. फास्ट टाइम मिनिस्टर करा हला. नेक्स्ट 6 months भितर से राज्यसभा को इलेक्ट होके आसिले. ओके, तो सर एटा कोन प्राइम मिनिस्टर को केस रे एप्लीकेबल हबो ना केवल मिनिस्टर को केस रे? हां सर म कहली जो मेंबरशिप माने जो माने न हे कि भी हे परिबे सेटा प्राइम मिनिस्टर को केस रे ना ना केवल मेंबर सब को? मिनिस्टर के केस रे. सब मिनिस्टर के केस रे. प्राइम मिनिस्टर पे स्पेशल प्रोविजन नहीं. सब मिनिस्टर के केस रे. ओके, जदि एबे धर गवर्नमेंट पावर को भी पार्टी पावर को आसला सी तांको भितर किए नाहंदी जे कि तांको सी प्राइम मिनिस्टर कर परिबे. सी काहा को भी प्राइम मिनिस्टर कर परिबे. ओके, तांको 6 मास भितर आनियार अछि इलेक्ट करी कि को भी ओटा हाउस. ओके, प्राइम मिनिस्टर को पाई भी सेटा एप्लीकेबल. ओके, तो कुछ नीड नॉट सर बी. हां अश्विनी वैष्णव केस रे भी सेमती थिला बोलु सर. हां अश्विनी वैष्णव हमर रेलवे मिनिस्टर तांकर केस रे सेमती थिला बोलु. से भी हेतिबे. मु जस्ट गोटे एग्जांपल देली मोर जा ना मन पड़ला. देयर आर सो मेनी एक्चुअली. हां, तांको फास्ट पोर्टफोलियो देला पर से नॉमिनेट थिले राज्यसभा. देयर आर सो मेनी. आई जस्ट मु तुमको बुझिया पे जनकर ना तुमको एटी कहली. दैट्स इट. ओके, बट सर नॉमिनेट सॉरी सर. हां सर नॉमिनेटेड मेंबर कोन सर प्राइम मिनिस्टर हे परिबे?
nominated member भी ହେଇ ପାରିବେ. You have to be a member, okay, not a elected member. कोड भी लिखा है नहीं, you can be elected member. You have to be a member of the house. Okay, तमे nominated ହେଇକି ବି ଆସିପାରିବ राज्यसभा को, no problem. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Okay, कोड भी लिखा है नहीं जे you have to be elected member. You have to be a member of the house. Means what? You can be a nominated member also, right? ଆଜ୍ଞା Need ସାର୍ not necessarily, second option देखो, need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of the Lok Sabha. This is wrong. You can be a member of Rajya Sabha also. Okay, so option B is also wrong. So option A कौन देची correct statement, need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must be a member of one of the house within 6 months. Okay, you can be a member of any house, Rajya Sabha, Lok Sabha, okay, within 6 months. Next, consider the following statement: the council of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament. Okay, then she puts which are correct. The union ministers shall hold the office during the pleasure of the president of India. The prime minister shall communicate to the president about the proposals for legislation. ये स्टेटमेंट 3 तो नहीं. ओके, ये क्वेश्चन टा आमे रखिबा. ओके, वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The president shall make rules. Consider the following statement: the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among minister of the said business. Second statement kochi, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. Okay, which of the statement are correct? Okay. Okay, so many people answer A and some answer D. Okay, so she पचारछु कौन correct. Okay, the council of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament. This statement is correct. हम कौन लेबे? सर The एटा तो union एटा रखा sorry हैतिला sorry सर, sorry होल्ड sorry कराइतिला. sorry. The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among minister of the said business. Okay, किए आपने रूल बनेबो, किए प्रपोजल दबो, प्रपोजल दबे प्राइम मिनिस्टर. Okay, to the president for the allocation of ministers to the said ministries. Okay, but in the name of president. Okay, so the president shall make rules. President exactly will not make rule, but in that rules president signature will be there. So the statement is correct when it says president shall make rules for the more convenient transaction of business. Okay, केमिति business चलिबो upper house lower house रे, that rules and regulations will be framed by the council of ministers and will be signed by the president. Okay, तातो आको हमें कहउछन president shall make rules. Okay, president actually किछि भी करंतिनी, everything will be done by the council of minister and signed by the president. Okay, so this statement is correct when it says ki president will make rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for allocation of ministers. Okay, this is correct. Second kono, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. Actually it is in the name of president. That's why he is called head of the state. Okay, जेते भी एग्जीक्यूटिव एक्शन माने कोन, जो भी गोटे एक्ट आसिला तो एक्ट को फाइनली साइन किए करिवो, प्रेसिडेंट. ओके, सो इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट विल साइन, देन ओनली इट विल बिकम एन एक्ट. Okay, so option B
is not correct. Okay, so these are also not correct and option A is correct. Okay, next सर लास्ट क्वेश्चन रो ऑप्शंस टा भूल अछि हेले भी टिके डिस्कस कर दियंतु ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିକି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଦେବି ହେଲା। ସାର୍ ଯୋଉଟା ରେଡ୍ କଲରରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ସାର୍ 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବାକି 1 ଆଉ 2 ହେଉଛି 2 ମୁଁ କେନ୍ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ସେଟା ଠିକ୍ କରିକି ଦେବି। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ वरी। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ମେନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍। मेन एडवांटेजेस कौन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, it provides continuity of policy and more efficient. The executive remains responsible to the legislature. Okay, and the head of the government cannot be changed without election. এটা ସମସ୍ତେ almost ଠିକ୍ आंसर ଦେଇଛ ହେଲା। तो विल सी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, एटा कोठी होछि हमर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रे, है ना। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड मोर एफिशिएंट, आम पढ़िले कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इज वेरी लेस इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट कैन चेंज एनी टाइम, On जोटा instable प्रेसिडेंट sir. कौन Stability कौन रहुनी ना सर. हाँ स्टेबिलिटी रोनी, बिकज गवर्नमेंट केतले चेंज हो पारे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिकी केतले तुम गवर्नमेंट भांगी पार, देयर इज ए कोअलिशन गवर्नमेंट तुम केतले भांगी जाई पारे। ओके, तो तार पॉलिसी रहबनी, कंटिन्यूटी रहबनी। थर्ड कौन, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लिस्ट, दिस इज द बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली। ओके, हम पढ़ले ना, दिस प्रोविजन इज द बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जदि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहांती, देन इट इज ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, so this option is correct. Third कौन, the head of the government cannot be changed without election, it can be changed। Okay, Change without election हबो. without election भी change कर परिबो तमे। ओके, सरकार काहे opposition आसी जिवो तो. यस, अपोजिशन रो किछि मेंबर से पडू माने गवर्नमेंट रो किछि लोक छाडी के पडे पळे आसले माने सरकार कर परिबे। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ओके, दैट्स इट। आज बेसिक क्वेश्चन मु बनेनी, टाइम हेलानी लास्ट मोमेंट सर टिके रिक्वेस्ट है प्रीवियस क्वेश्चन टिके देखिबे तो. एटा नहीं ता गोटे. एटा मु तुमको पीडीएफ दे देबी। सर ऑप्शन टिके और थोड़े हार्ट ऑप्शन टिके बुझे दे. हाँ देखो, एटा तो तुम बुझिलो ठीक, सर नो ए सर ऑप्शन टा तो बुझिलो ठीक हाँ हाँ बुझे पड़ी सर. हैला। सेकंड टा तो ठीक बुझिलो, फास्ट टा बुझियारे प्रॉब्लम होची है ना। सर हाँ, फास्ट कौन कहूँ, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द, देखो आमर सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम रे प्रेसिडेंट डजंट डू एनीथिंग, ही ओनली साइंस व्हाट एवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड्स। ओके, बट इट कौन हुए, जो रूल्स फॉर्मुलेट हुए कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस लोकसभा और राज्यसभा जहाँ भी जमती भी हम, प्लस allocation of ministries will be done by president but in the recommendation of prime minister. So who will take the decision? President. Actually decision will be taken by prime minister only, but in theoretically ଆମର ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ କି the allocation of ministries will be done by president in recommendation of prime minister. Prime minister will recommend कि काहाକୁ କୋଉ ministry ଦିଆହବ, but the decision will be taken by president, means the signature will be done by president. बुझିପାରିଲ? So सर in that sense the second part is correct, right? सर ଆଉ ଏ ପାର୍ଟଟା ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଦେଖିବ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ରୁଲ୍ସ ଫର୍ ମୋର୍ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ legislative power of president. When we will study president chapter, ସେଠି ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ଅଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାୱାର ଅଛି, ହଁ ନା, ଯାହା ସବୁ ପାୱାର ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ओके, हियर ऑल्सो आई तुमको माने बुझो यार मीनिंग कौन कि गवर्नमेंट विल